Hello dear learners, this is Navneet Kaur, your chemistry instructor. I welcome you all in this new session. Let's have fun with chemistry. Okay, so my dear students, you will be very pleased to know that in this particular video, we are going to learn about acid and bases. We are not going to learn the whole concepts, but we are going to solve a lot of questions concepts to clear our concepts in a more better way. Okay, so let's start. So beginning with our first question, we have why should not Kurt and the source substances be kept in the copper vessels? So by this question we mean कि हमें copper vessel में कोई भी source substance या फिर curd which is our daily need, तो हमें उसे क्यों इकट्ठा नहीं रखना चाहिए? लाइक जो कर्ड है, जब कोई भी सोर्स सब्सटेंस है, उसे हम कॉपर वेसल में क्यों नहीं रख सकते हैं? तो इसका रीजन क्या है कि आपको पता होगा कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर इज अ मेटल, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर द very basic reaction for this only. So what we have, copper is a metal, right? Copper is a metal, and when copper react with acid, जितने भी हमारे source substances होते हैं, most of those substances contain some acid, right? It may be in the form of lactic acid, citric acid, or any other acid. So it when react with acid, it leads to the formation of salt plus hydrogen gas, right? This was the reaction which we used to write in our concept clearance. And in this case, the product formed are very harmful product, right? When copper reacts with acid, it leads to the formation of harmful product which are not fit for human consumption. Okay. तो इस वजह से हमें सजेस्ट किया जाता है कि हमारी जो सोर्स सब्सटेंसेस हैं, जो कर्ड है, उसे हम कॉपर वेसल में ना रखें. ओके, सिर्फ कॉपर नहीं, इसके साथ में ब्रास भी होगा. ब्रास इज ऑल्सो सेम एज कॉपर. तो यहाँ पर हम कॉपर और ब्रास दोनों में से किसी भी वेसल में हमारे जो कर्ड हैं, जो कोई भी सोर्स सब्सटेंसेस हैं, वो नहीं रखते हैं. द रीजन बीइंग कि जो हमारा कॉपर होता है, वो जो एसिड प्रेजेंट है कर्ड में, जो सोर्स सब्सटेंसेस में, उसके साथ में रिएक्ट करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होते हैं, एंड इट कैन लीड्स टू मेनी ऑफ द डिसीजेस. Okay, so our second question is, which is the gas or which gas is liberated when an acid reacts with a metal? Very easy, very easy. हमने अभी अभी इससे related question किया है. So you can answer it very easily and very fastly, right? So its answer is hydrogen gas. Right? हमने अभी इसकी reaction भी की थी ना, metal
plus acid leads to the formation of salt plus liberation of hydrogen gas. So this is very clear from this very step that hydrogen gas is liberated when metals react with acid. And how to check or how to test whether the gas liberated is hydrogen or not. अब जो हमारे पास गैस लिबरेट हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन नहीं है, कोई और गैस नहीं है? तो इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है. हम कैसे टेस्ट करते हैं उसकी प्रेजेंस को? एनी आइडिया? When we burn or when we bring the test tube near burner or fire, यहाँ पर कुछ भी we can use it in any source of fire. It burns with pop sound. Okay, so my dear students, it is not important that in every case we'll be using a fire or burner. Here it is very important to note that we use soap bubbles. Soap bubbles are used to test the presence of hydrogen gas. So this is very clear from this fact. Okay, so now our next question is, why do okay, our next question is, why do HCl, HNO3, that is nitric acid, show acidic behavior? In aqueous solution? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि HCl और आई मीन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, ये एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है ना, हम इसे कितने वेज में मोल्ड कर सकते हैं. सबसे पहले तो जो मैंने अभी अभी लिखा है कि ये क्यों शो करते हैं. सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो HCl है हमारे पास, जो नाइट्रिक एसिड है, जो कोई भी एसिड है, वो अपना एसिडिक बिहेवियर सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही क्यों शो करते हैं, राइट. इसके साथ में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो हमारे पास HCl है, जो हमारे पास जो HNO3 है, दैट इज जो नाइट्रिक एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, बट ग्लूकोज और अल्कोहल और इतने सारे कंपाउंड्स, वो बाकी सब क्यों नहीं एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक बिहेवियर शो करते, राइट. सो सबसे पहले तो हमारे पास एसिड की डेफिनेशन ही क्या होती है. Acid is something that can release H plus ion, right? H positive ion is released, then we say that the substance is acidic in nature, right? This is one of the factor to identify whether the substance is acid or not. So हमारे पास जो HCl है, let us check whether it release H plus ion or not. H plus plus Cl minus Cl negative, right? So it only in the presence of water. अगर वाटर नहीं होगा तो इट विल नॉट लीड्स टू द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ओके, सेम वे में जो नाइट्रिक एसिड की डिसोसिएशन है, दिस विल बी योर टास्क टू डू इट. Okay, here are two compounds A plus B. You need to write it down, find out
कौन से हमारे पास दो कंपाउंड होने वाले, एक तो क्लियर है ना कि एक तो H पॉजिटिव होगा, राइट। हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा A है दैट इज H पॉजिटिव, तो जो B है B you'll have to find. Okay, just find it out and write the answer in the comment section. Let's check how many of you can answer this question. Okay, so ये तो हमारे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ना कि HCl, HNO3 ये दोनों है जो ये अपना एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन, राइट। जो सेकंड क्वेश्चन हमने बोला कि ये सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही क्यों करते हैं, बिकॉज विदाउट द वाटर, वाटर हो एक्वा सॉल्यूशन अगर नहीं हो तो डिसोसिएशन नहीं हो पाती है आयंस की। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ है ना, इट विल रिएक्ट विद H2O that is water and leads to the formation of hydronium ion. This ion is hydronium ion. ओके, सो नेक्स्ट था हमारे पास ग्लूकोज या अल्कोहल है जो, वो क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं, ऐसे एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन in aqueous solution. One more thing you need to remember, that alcohols up to an extent show acidic behavior, right? Very less and very negligible amount, but they do show. Okay, so yes, as compared to HCl and HNO3, this behavior is very less, we can say, so we used to neglect it. So इस क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. I hope you will take all these things very. Okay, so next we have, why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Why does the aqueous solution of water, sorry, aqueous solution of acid conduct electricity? तो क्यों करता है कंडक्ट भाई? एनी गेस? तो हमारे जो एसिड होते हैं दे डिसोसिएट इनटू आयंस, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में HCl की डिसोसिएशन के बारे में ही डिस्कस किया था. तो ये क्या किया था हमने कि जो हमारा एसिड है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट. तो ये जो हमारे पास आयंस फॉर्मेशन हो रहे हैं, दिस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ना एक क्वेश्चन होगा कि जो हमारे पास आयंस है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है, ये तो यहाँ HCl में भी प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर HCl ने डायरेक्टली इन द सॉलिड स्टेट और इन एनी अदर स्टेट रेदर देन एक्वस स्टेट क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो आयंस के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है, right? Only ions, if ions are present, then only HCl will be able to conduct electricity. तो जो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, न्यूट्रल नॉट इन द नॉट इन द सेंस लाइक एसिडिक नहीं होगा, जब बेसिक नहीं होगा. न्यूट्रल मीन्स इट विल नॉट हैव एनी चार्ज, राइट. यहाँ पर कोई आयन तो है नहीं, एंड इफ देयर इज नो आयन इट मीन्स नो इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so this being the reason, HCl conducts electricity only in aqueous solution. Okay, again we have some question related to this only. The next question we have is,
why does the dry HCl gas not conduct, not change the color of लिटमस पेपर? कि हमारे पास जो ड्राई HCl गैस होती है वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती? ओके, सो रीजन बिहाइंड इट इज कि जो हमारा लिटमस का कलर चेंज किया जाता है ना, हमारे पास HCl है, इसकी डिसोसिएशन अगर हम कर दें H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये किसकी वजह से होते हैं? हम किसी चीज को एसिड ही क्यों बोलते हैं? H पॉजिटिव आयन के रिलीज की वजह से। मींस जो लिटमस पेपर का हमारा कलर चेंज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ this H positive ion. This is responsible for change in color of litmus paper. Right? और हमारे पास जो dry HCl है, अगर वो dry है, it means no ions are formed. Right? And if ions are not formed, means ये क्या imply करता है? H positive is not formed. अगर H पॉजिटिव की फॉर्मेशन ही नहीं हुई, मतलब नो कलर चेंज विल टेक प्लेस, right? So you can also learn this question in the form of this flow chart or something that makes your answer creative and जिससे आप learn कर पाए, right? इसको just cram नहीं करना है, जो भी हम learn कर रहे हैं इन सब चीजों को you need to remember, but along with remembering आपको ये सब समझ में भी आना चाहिए, राइट? ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं दीज आर वेरी इजी, अगर आप एक बार भी नहीं समझ लोगे ना तो आप इसे अच्छे से अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे। ओके, okay, so my dear students, next we have how does the concentration of ions get affected when a solution of an acid is diluted? तो नाउ वी हैव कि जब हमारे पास कोई एसिड को हम डिल्यूट कर रहे हैं, दैट इज हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, हम एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे, वाटर में एसिड विद ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, एंड दैट टू विद कांस्टेंट स्टिरिंग। सो जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन है so here we have concentration of
H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास कोई भी अगर एसिड हो उसको हम डिल्यूट कर रहे हैं, दैट इज वी आर इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन दैट पर्टिकुलर एसिड। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन के ऊपर क्या उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, राइट। तो जो हमारी देखो, व्हेन एसिड इज डिल्यूटेड, जब हम किसी एसिड को डिल्यूट कर रहे हैं ना, concentration of hydronium ion, concentration of hydronium ion per unit volume decreases। जो हमारे हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन है ना वो डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ऑल्सो डिक्रीजेस। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास एसिड है ना, ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एसिड है और हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया, ठीक है। हम ऐसे ले लेते हैं कि पहले हमारे पास जो एसिड था उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत कम थी, लेट इट बी 50 ml हम एसिड ले रहे हैं, वैसे इतना कम होएगा नहीं बट स्टिल फॉर कंसिडरिंग, और हमारे पास जो वाटर है ये हम 500 ml ले रहे हैं, राइट। तो इसका जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं ये हो गया 550 ml। तो बच्चे पहले जितना हमारे पास कंसेंट्रेशन ये थोड़ी सी अमाउंट में थी, वो अब जो है इतनी ज्यादा अमाउंट में वही सेम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल टेक्स प्लेस। तो इससे हमारी जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी। दिस इज अ रीजन व्हाई द कंसेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। ओके, so this was just for your understanding. This is not going to be a specific example which you are going to give in your exam. So yeah. Okay, again we have the same question. While diluting the acid, जब हम acid को dilute कर रहे हैं, why it is recommended that the acid should be added to water, कि हमारे पास जो एसिड है हम वो वाटर में ऐड करें एंड नॉट वाटर टू एसिड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमने जब फुल चैप्टर को किया था उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। यू नीड टू सी दैट वीडियो फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, काइंडली चेक दोज वीडियोस। इसका आंसर आपको उसी वीडियो में प्रॉपर मिलेगा। एंड दिस इज योर वर्क, दिस इज योर होमवर्क हियर, आई कैन से, टू डू दिस क्वेश्चन विद very interesting way। Okay, you need to do this question as this question is very important। Okay, a question related to this particular topic is going to be asked in your final exams, so take it very seriously। Okay, जो इसका मेन रीजन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब हम एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, तो दिस प्रोसेस इज नॉट दैट मच एक्सोथर्मिक, राइट। और ऐसा नहीं है कि अगर हम एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो बस एक ही बार में सारे का सारा कर दें, नो।
इससे बहुत लेस क्वांटिटी में, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स हमने ऐड करना है, एंड दैट टू विद कांस्टेंट स्टिरिंग, उसे हिलाते हिलाते, ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही बस डाल दिया। You need to take care of a lot of things and proper precaution should be followed. और अगर हम वाटर को ऐड करते हैं ना, वाटर टू एसिड, दिस इज वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से जो हमारा बीकर है, the beaker can break and the solution can splash out. सॉल्यूशन वहां पर क्या होगा, वही एसिड एंड वाटर है जो, राइट। So this was a reason, but still, if you want the answer of this question in very you can say very presentable manner, you can check our previous videos. Okay. और अगर आप चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होने चाहिए। उसके लिए हम जो भी हमारी अब तक की वीडियोस हैं, काइंडली वॉच ऑल द वीडियोस टू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड। Okay, so my dear students, moving forward, we have our next question. Okay, very interesting and very tricky question. Do basic solution also have H positive ion? तो आपको क्या लगता है, H पॉजिटिव आयन होगा या नहीं होगा? गिव रीजन, जो भी हमारा आंसर है उसका रीजन भी देना है। हम अगर यस कहते हैं उसके लिए भी, अगर नो कहते हैं उसके लिए भी। तो क्या लगता है, बेसिक हैं जो, वो तो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं ना, तो उनके पास में H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, राइट? उनके पास होते हैं, दे टू हैव H पॉजिटिव आयंस। H positive ions are present in basic substances, are present in bases। अगर उनके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं तो फिर हम उन्हें एसिड क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे पास सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं उन्हें तो हम एसिड बोलते हैं ना। बट जो हमारे पास जितने भी कंपाउंड H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं सभी एसिड नहीं होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर एसिड, बट यहाँ पर हम उन्हें बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम चेक करें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन को, तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है, whereas OH की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक कब माना जाएगा? जब उसमें H पॉजिटिव की जो कंसेंट्रेशन है OH नेगेटिव से ज्यादा हो। ऑन द सेम टाइम हमारे पास कोई चीज बेसिक कब होगी? जब OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन से ज्यादा हो। Okay, so next we have very easy. What is the common name of CaOCl2? तो क्या है इसका कॉमन नेम? We have learned the common name of this very compound when we were learning about salts, especially about sodium chloride. सोडियम क्लोराइड से जो नेक्स्ट हमारे सॉल्ट्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, उसमें हमने ये पढ़ा था। इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट? Okay, so next question we have, what happened
if the solution of hydrogen carbonate is heated. So आंसर सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन ही लिखेंगे. सोडियम, here it is sodium hydrogen carbonate. Here we have sodium hydrogen carbonate. Okay, sodium hydrogen carbonate. It, when is heated, leads to the formation of N2, that is sodium carbonate plus water and carbon dioxide as a byproduct. Next, we have very interesting question, that why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? कि हमारे पास जो रेन वाटर होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट जो हमारे डिस्टिल्ड वाटर है हमारे पास वो क्यों नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका आंसर है कि जो हमारे डिस्टिल्ड वाटर है ना, इट इज वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. डिस्टिल्ड वाटर इज वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. इसमें कोई भी आयंस की ऐसी एज इट इज फॉर्मेशन नहीं होती है. लाइक वी कैन से जो हमारे पास एसिडिक नेचर नहीं होता है इसका, इट इज नॉन एसिडिक. अगर ये नॉन एसिडिक है मीन्स H positive ion will not be released, and if H positive ion is not released, then electricity will not be conducted. On the other hand, rainwater have some acidic content and it leads to the formation of H positive ion, और we can say अगर H positive ion form हो रहा है तो only H positive नहीं होगा, साथ में एक anion भी form होगा, right? तो we can say it leads to the formation of ions, and अगर ions की formation हो रही है then electricity will be conducted. Okay, so this was a very basic question and very interesting question. Okay, so my dear student, this was all about the questions related to acid and base. I hope you enjoyed today's session. And in the next lecture, in the next session, we'll be learning about metals and non-metals in the form of questions. Right? We have already done these chapters in our class, and now we are just going through the concepts in the form of questions so that you know how to attempt the question, and also we can revise our chapters, revise our concepts with the help of these questions.